Okay, so we were discussing conformers of butane in the previous lecture. I will show you now the conformers of butane. We have to understand which conformer has more energy and which conformer has less energy. Okay, so if I draw this particular conformer of butane and name this as 1, so I've named this 1. So 1 represents this particular conformer which you see on the screen now. And it is anti-conformer. Why is it called anti-conformer? Now see, this methyl group and this methyl group are opposite to each other. The two methyl groups are opposite to each other. That is why this conformer is called anti-conformer. Okay. Now, if I look at the front carbon, then the front carbon is this. Right? This is the front carbon, and these are the groups attached to the front carbon. The larger circle represents the back carbon. The larger circle represents the back carbon. And hence, these are the groups attached to the back carbon. If I show you this conformer, then you should be able to tell immediately that this is anti-conformer. Why anti? Because the two methyl groups are opposite to each other. So it's called anti-conformer. Anti, A-N-T-I. Okay, now, if I rotate the groups attached to the back carbon by 60 degrees, so then this is how they will undergo rotation. If I rotate the groups attached to the back carbon by 60 degrees, then what will happen? This group will appear here now, right? This hydrogen will appear here, and this hydrogen will appear here. So if I rotate by 60 degrees, what I'll obtain is actually this. So I will obtain 2. From 1, if I want to come to 2, how will I do that? I will rotate. So I have rotated only the groups which are attached to the back carbon, and hence I've obtained this particular conformer. This conformer is called partially eclipsed form. Why partially eclipsed? Both are in the form of Y. This is also Y, and this back carbon also has Y. That is why this is called eclipsed. Now, why partially eclipsed? Partially eclipsed because CH3, if you look at this particular form, then here I have H, and behind H I have CH3. Behind H I have CH3. That means H and CH3 are lined up one next to the other. So the two CH3 groups are not lined up next to each other. H and CH3 are lined up next to each other. That is why I say this is partially eclipsed.
H and CH3 are lined up next to each other. That is why it is called partially eclipsed. Here also H and CH3 are lined up next to each other. So this is nothing but partially eclipsed. Now again, if I rotate the groups attached to the back carbon by another 60 degrees, so this will come here like this. This will go here, and this hydrogen will appear here. So if I rotate by another 60 degrees, then I will obtain 3. So I'll get this one. So this is called gauche. Why gauche? Now if you see the angle between these two CH3 groups is 60 degrees. So it's called gauche. Again, if I rotate the groups attached to the back carbon by another 60 degrees, then this will appear here, this will appear here, and this will appear here. So I'll get another conformer from 3, and that will be this one, fourth one. So if I rotate the groups again by 60 degrees in 3, I'll get the fourth conformer. The fourth one is called fully eclipsed. Now it's fully eclipsed because one methyl and the other one behind it is also methyl. So the two methyl groups, which are bulky ones, are lined up one next to the other. Hence, this is called fully eclipsed form. So if you carefully notice, fourth and second are not the same. Second is partially eclipsed, wherein I had H and CH3 lined up next to one another. Whereas in the fourth one, I have both the methyl groups lined up next to each other. So fourth is fully eclipsed, and second one is partially eclipsed. Fourth one is fully eclipsed. Now again, if I rotate the groups attached to the back carbon by another 60 degrees, then what will happen? Now this will come here, this methyl will come here, and the hydrogen will come here. So I'll get this form. So again, this is gauche. Again, if I rotate the group touch the back carbon by another 60 degrees, from here I'll get this. Again, this is partially eclipsed. Again, if I rotate groups attached to the back carbon by another 60 degrees, then I'll get this. Again, that's anti. So we started with anti and again we came back to anti. We started with anti and again we came back to anti. So repetition starts occurring. So रोटेशन कर करके हम लोग अलग अलग कन्फॉर्मर्स ला रहे हैं और फिर रेपिटेशन भी हो रहा है.
सो ये हमको देखना था कि अल्टीमेटली रेपिटेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप रोटेट कर रहे हो ना, तो रोटेट करते करते ऐसा फिर से आ जाएगा। Hence, I can say that 1 is same as 7th, 1 is anti, 7th is also anti. So 1 is same as 7th. 6th one, that is partially eclipsed. 6th is exactly same as second one, because second is also partially eclipsed. Third one is gauche. Fifth one is also gauche. That means third and fifth are same. Right? So first is same as 7th. Second is same as 6th. And third is same as 5th. So this is one conclusion that we can draw. This is one conclusion that we can draw. Right? Now you please draw these conformers which I have drawn. Start drawing them. Give the heading and start drawing. Yes. Start drawing. Put this heading, energy diagram for conformers of butane. And once we're done with all the 7 conformers, I mean all these 7, the ones that have been drawn here, then I will show you the energy diagram. First, draw these
हो गया यहाँ तक ड्रॉ करके। डन, यहाँ तक ड्रॉ करके। प्लीज ड्रॉ दिस। ऑलराइट, नाउ ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल है एंटी, उसके बाद गॉश, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड, और उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल है, ये लोग देख सकते हैं यहाँ पे। Anti is the most stable conformer of butane and fully eclipsed is the least stable conformer of butane. Now, if something is more stable, will it have less energy or more energy? If something is more stable, will it have a high energy or a low energy? If something is very stable, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम है या ज्यादा है? यस, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या? जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है, जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करूं तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एनर्जी अगर मैं लिखूं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा? दिस विल बी द ऑर्डर। ऑर्डर उल्टा हो जाता है स्टेबिलिटी का और एनर्जी का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। सो मोर द स्टेबिलिटी लोअर इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। जो भी चीज ज्यादा स्टेबल है उसकी खुद की एनर्जी कम होती है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम की अगर बात करें तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? एंटी। एंड सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब ग्राफ देखते हैं। अब ग्राफ को देखो, एनर्जी इज अलोंग द वाई एक्सिस। लोएस्ट एनर्जी किसकी है? वन की। सो वन वाज एंटी। और देखो वन की जो एनर्जी है सेवन की भी वही एनर्जी है। दिस पॉइंट एंटी, because both 1 and 7 represent the anti-conformer of butane. So 1 की जो एनर्जी है 7 की भी वही एनर्जी रहेगी और सबसे कम रहेगी, बिकॉज एंटी की एनर्जी सबसे कम होती है। अब यहाँ पे क्या है हम लोगों ने? एंटी की एनर्जी सबसे कम होती है। और फिर देखो ये और ये, सो 2 की जो एनर्जी है वो 1 से ज्यादा है और 2 और 6 सेम है।
2 and 6 सेम है, क्या है 2 और 6? Partially eclipsed. Look at 2. Yeah, na 2. Partially eclipsed. So this is 2. 2 is partially eclipsed. 6 is also partially eclipsed. So both 2 and 6 have the same energy. ये है partially eclipsed. तो एंटी से तो partially eclipsed की एनर्जी ज्यादा ही है ना, so हो जाएगा ये partially eclipsed. So 2 and 6 represent partially eclipsed. फिर देखो 2 से 3 की एनर्जी कम है, यहाँ पे 3 है इस पॉइंट पे, and 3 and 5 both have the same energy because 3 is same as 5. So 3 क्या है? Gosh. 3 and 5 both are gosh. देखो चेक करो यहाँ पे 3 और 5 लिखा हूँ, ये है 5 gosh और ये है 3 gosh. So 3 and 5 both represent what? Gosh. So ऑर्डर ऑफ एनर्जीज की अगर बात करें तो एंटी से गॉश की एनर्जी ज्यादा है और पार्शियली एक्लिप्स से गॉश की एनर्जी कम है. ये है गॉश, पार्शियली एक्लिप्स से गॉश की एनर्जी कम है लेकिन एंटी से गॉश की एनर्जी ज्यादा है. And this last one is fourth one, this point, this is fully eclipsed. Fully eclipsed. तो अगर आपको ये ग्राफ दे दे एनर्जी डायग्राम और फिर आपको पूछे कि which point represents which conformer, तो आपको आना चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करेंगे, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज याद रखेंगे. देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा एनर्जी ग्राफ में जिसकी होगी वो कन्फर्मर कौन सा होगा? वो कन्फर्मर होगा फुल्ली एक्लिप्स्ड, सबसे ज्यादा एनर्जी. और सबसे कम एनर्जी जिसकी होगी वो वाला कन्फर्मर कौन सा होगा? वो वाला होगा एंटी कन्फर्मर. और उसके बाद देखो एंटी से इमीडिएटली थोड़ा सा ज्यादा किसका है? जिसकी एनर्जी एंटी से थोड़ी सी ज्यादा है वो होगी गॉश. और फिर गॉश से देखो कि उसके बाद किसका ज्यादा है, तो वो रहेगा पार्शियल एक्लिप्स्ड. सो ऑर्डर ऑफ एनर्जीज को देख के हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कन्फर्मर का कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है. यस, ड्रॉ दिस ग्राफ, ड्रॉ कर लो ग्राफ.
हो गया ड्रॉ करके ये मिला ग्राफ. Yes, have you drawn this graph? Okay. ये एंगल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैं 60 डिग्री से घुमा रहा था ना पीछे, तो वैसा. वन को 60 डिग्री से घुमाया, वन जो था ना पहला वाला, देखो क्या है, ये वन था. 60 डिग्री जो यहाँ से ऐसे 60 डिग्री घुमा दिया तो ऐसा आ जाएगा ना, टू आ गया. फिर टू को 60 डिग्री से घुमाया, टू के पीछे वाले ग्रुप्स को, सो थ्री आ गया, एंड सो ऑन. तो इसके लिए यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है 60, 120, 180, 240, 300, 360. मतलब क्या है इसका? 60 डिग्री से घुमाया वन को तो टू आया, फिर टू के ग्रुप्स को 60 डिग्री से घुमाया तो थ्री आया. ये थ्री है ना, थ्री के ग्रुप्स को 60 डिग्री से घुमाया तो फोर्थ आया, फोर्थ के ग्रुप्स को 60 डिग्री से घुमाया तो फिफ्थ आया, फिफ्थ के ग्रुप्स को 60 डिग्री से घुमाया तो सिक्स्थ आया, और सिक्स्थ के ग्रुप्स को घुमाया 60 डिग्री से सेवेंथ आया. ये इसके लिए ये डिनोट करता है एंगल्स. तो कंक्लूजन यही था, 1 and 7 have the same energy as both are anti. 2 and 6 have the same energy as both are partially eclipsed. 3 and 5 have the same energy as both are gauche. And then fourth has the highest energy. ऐसा है. So conclusion लिख लो. Conclusion. Please write down the conclusion.
ओके डन, कंक्लूजन लिख के हो गया। ओके Okay, so the next part of the chapter is this chair conformations of cyclohexane. अब cyclohexane क्या होता है? सबको पता है cyclohexane ऐसा होता है, हम लोग cyclohexane को इस तरीके से represent करते हैं, बट ये हम लोग दिखाने के लिए दिखाते हैं, पेपर पे दिखाने के लिए दिखाते तो है ऐसा, लेकिन cyclohexane एक्चुअली इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि cyclohexane में जो ये एंगल्स है, देखो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो। Each of these carbon atoms is sp3 hybridized. तो sp3 hybridized का मतलब है कि बॉन्ड एंगल क्लोज टू 109.5 डिग्रीज होना चाहिए, लेकिन ये अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो एक एक बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है अराउंड 120 डिग्रीज के फॉर्म में हो रहा है, तो 120 डिग्रीज काफी दूर है 109.5 डिग्रीज से, तो एंगल स्ट्रेन फिर ज्यादा हो जाता है। एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो जाने की वजह से वो इस तरीके से नहीं एग्जिस्ट करता है, उसको बहुत स्ट्रेन मिलता है, स्ट्रेन होने की वजह से वो टूट सकता है, तो वो रिंग इस तरीके से स्टेबल होता नहीं है। हम लोग बना तो देते हैं बट एक्चुअली ऐसा वो स्टेबल होता नहीं है। वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली वो एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में। अब देखो चेयर फॉर्म दिख रहा है आपको, ये एक चेयर फॉर्म होता है और ये दूसरा चेयर फॉर्म होता है, किसी भी एक फॉर्म में ये आप दिखा सकते हो, ये भी चेयर है, ये भी चेयर है। अब हम लोग जानते हैं चेयर दिखाने के तरीके क्या है, लेट्स डू दैट। So if I show this chair, तो आप ऐसे दिखा सकते हो चेयर। इसको ध्यान से समझ लो, अभी ड्रॉ मत करो, अभी देख लो। ये चेयर एक होता है, ओके, इसको रेफरेंस मानो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले कार्बन को हमेशा रेफरेंस मानो, ओके रेफरेंस। उसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ, ये रेफरेंस होगा ना, रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या है अभी देखते हैं। मतलब इस पॉइंट को याद रखना है, याद रखना है मतलब क्या, कैसे याद रखना है, देखो ऐसे याद रखना है। यहाँ से एक लाइन आप ऊपर की ओर खींचोगे, you will draw one line vertically upward and another line slanted, but the slanted line must be downward. I repeat, since this is your reference, you will keep everything about this point in your mind. So from this point, you will draw one vertical line upward and another line downward, but the line that you draw downward will be slanted. ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड ड्रॉ करोगे यहाँ पे एक लाइन और एक स्लांटेड नीचे की ओर ड्रॉ करो, राइट। अगर वर्टिकली अपवर्ड आपने ड्रॉ किया है जिस लाइन को, उस वाले बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल बॉन्ड? जो वर्टिकली होता है, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो वो बात की बात है, बट अगर वर्टिकल है, वर्टिकल, वर्टिकल को बोलते हैं एक्सियल, और जो स्लांटेड लाइन है, टेढ़ा जो लाइन बनाया है, स्लांटेड जो लाइन है, स्लांटेड, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। वर्टिकल मतलब एक्सियल, स्लांटेड मतलब इक्वेटोरियल। अब देखो, तो ये हो गया एक्सियल ऊपर की ओर, और ये वाला नीचे जो स्लांटेड हो गया इक्वेटोरियल। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस पॉइंट पे अगर आपने बना दिया एक्सियल अपवर्ड,
यहाँ पे एक्सियल मस्ट बी डाउनवर्ड, मतलब वो अल्टरनेट जाता है, आजू बाजू में जो रहेगा वो उसका अल्टरनेट हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एक्सियल ऊपर है तो नेक्स्ट वाले पे एक्सियल नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सियल नीचे हो गया, यहाँ पे एक्सियल नीचे हो गया, वापस यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक्सियल ऊपर हो जाएगा, वापस यहाँ पे एक्सियल नीचे हो जाएगा, इस वाले पे एक्सियल ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे एक्सियल नीचे हो जाएगा। तो मैंने सारे एक्सियल बॉन्ड्स दिखा दिए। एक्सियल मतलब वर्टिकल। ओके, एक्सियल का मतलब होता है वर्टिकल। तो ऑल्टरनेट अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा होने वाला है। इसके लिए मैंने बोला था इस पॉइंट को रेफरेंस मान लो। तो अगर इस वाले पॉइंट के बारे में आपको पता है तो ऑटोमेटिकली आप अप डाउन कर पाओगे। ऑलराइट, तो देखो मैंने सारे एक्सियल बॉन्ड्स दिखा दिए, तो इक्वेटोरियल दिखाना पड़ेगा अभी। तो इक्वेटोरियल भी ऐसा जाएगा। अभी देखो रेफरेंस वाले पॉइंट पे इक्वेटोरियल नीचे है, तो उसके नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल ऊपर रहेगा, तो इसके लिए ऐसा दिखा दिया मैंने। उसके नेक्स्ट वाले में वापस इक्वेटोरियल नीचे रहेगा, उसके नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल वापस ऊपर रहेगा, उसके नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल नीचे रहेगा, उसके नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल ऊपर रहेगा। तो ऐसा हो जाएगा। Okay? तो अभी इसको देखो, अभी इसमें जो भी रेड लाइन्स है वो सब वर्टिकल है, जो भी ब्लू लाइन्स है वो सारे के सारे स्लैंटेड है। So the red lines indicate axial bonds and the blue lines indicate equatorial bonds. अब इस वाले चेयर को देखते हैं, इसमें भी वही है, रेड वाला vertical, blue वाले slanted. So red ones, all the red lines indicate axial bonds in this and all the blue lines indicate equatorial bonds in this. वापस इसमें हम लोग बना के देखते हैं क्या होता है। अब इसको रेफरेंस लेंगे, दिस इज द रेफरेंस नाउ, दिस इज द रेफरेंस नाउ। अगर ये रेफरेंस है तो यहाँ पे चालू करते हैं, देखो अभी। अब यहाँ पे जो नीचे वाला लाइन जाएगा वो रहेगा वर्टिकल, तो ये एक्सियल है। तो ये अगर एक्सियल है तो फिर इक्वेटोरियल ऊपर की ओर जाएगा, बाजू वाले पे क्या होगा, एक्सियल ऊपर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सियल नीचे था तो बाजू वाले पे एक्सियल ऊपर रहेगा, उसके नेक्स्ट पे वापस एक्सियल नीचे रहेगा, उसके नेक्स्ट वाले पे वापस एक्सियल ऊपर रहेगा, वापस नेक्स्ट पे एक्सियल नीचे और वापस नेक्स्ट पे एक्सियल ऊपर। तो सारे एक्सियल बॉन्ड्स दिखा दिए मैंने, ऊपर नीचे ऐसा ऑल्टरनेट जाता रहता है पैटर्न। तो ये एक्सियल 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 एक्सियल। अब इक्वेटोरियल दिखाएंगे अगर, तो इक्वेटोरियल को हमेशा टेढ़ा दिखाना होता है। यहाँ पे ये वाला इक्वेटोरियल है और ये ऊपर की ओर है, हेंस नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल नीचे रहेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेटोरियल। उसके नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल ऊपर, उसके नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल नीचे, उसके नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल ऊपर और उसके नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल नीचे। हो गया। सो रेफरेंस वाले पॉइंट को देख के काम करना है।
So now I can draw the chair forms of cycloids. Please draw them. Okay, done. Chair forms. और ये भी लिख लो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला पॉइंट यहाँ पे. The red lines denote axial bonds and the blue lines denote equatorial bonds.
तो क्या लिख के राइट डाउन कर लो। ओके, अब ये तो हम लोगों ने सिर्फ साइक्लोहेक्सेन दिखाया था ना, देखो हाइड्रोजन है हर एक कार्बन पे। सो बेसिकली क्या हो गया, C6H12 साइक्लोहेक्सेन, दिस आल्सो C6H12, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स दिखाई गए हैं, तो C6H12 इज साइक्लोहेक्सेन। बट नाउ अगर साइक्लोहेक्सेन पे कुछ लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो क्या होगा, तो ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लगे हुए हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ चेयर फॉर्म्स विद ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। For greater stability, maximum groups and substituents should be present along equatorial positions in the chair conformer. तो ये पहली बात है, पहला रूल क्या है, for more stability, the groups and atoms must be present along इक्वेटोरियल पोजीशंस, मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में जो है वो होने चाहिए, वहां पे होने चाहिए ग्रुप्स एंड एटम्स, तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी चेयर फॉर्म को। अब दो चेयर फॉर्म्स देखे हम लोगों ने, तो दोनों के दोनों चेयर फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे हमें। दोनों के दोनों चेयर फॉर्म्स बनाने के बाद ये देखना है कि कौन से चेयर में ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हो। जिस चेयर फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा एटम्स और ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं, वो वाला चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। और एक रूल है कि अगर बल्कि ग्रुप लाइक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो स्पेशल आपको ये याद रखना पड़ेगा, टर्ट ब्यूटाइल। व्हाट इज टर्ट ब्यूटाइल? दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। तो अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हुआ, CCH3 थ्राइस, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। अगर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ हमें टर्ट ब्यूटाइल पे ही फोकस करना है। मतलब क्या, फिर बाकी ग्रुप्स और एटम्स को नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि दोनों चेयर फॉर्म्स में से कौन से चेयर फॉर्म में टर्ट ब्यूटाइल वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। बाकी को देखना नहीं है, बाकी वो इक्वेटोरियल पे रहे या ना रहे, पहले आपको ये चेक करना है कि टर्ट ब्यूटाइल वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे किस चेयर फॉर्म में है। आउट ऑफ द टू चेयर फॉर्म्स व्हिच आई हैव शोन यू, व्हिच चेयर फॉर्म हैज टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन। जिस चेयर फॉर्म में टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, वो वाला चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो राइट डाउन दिस स्टेबिलिटी ऑफ चेयर फॉर्म्स विद ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका लिख लो पूरा रूल। दो रूल्स है ना, राइट डाउन दिस फुल।
ओके, डन। यहाँ तक लिखते हैं स्टेबिलिटी के रूल्स। यस, हो गया यहाँ तक। ऑलराइट, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग चेयर फॉर्म को ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम अ नॉर्मल गिवन फॉर्म, तो वो दिखाते हैं। अब मानो ऐसा देख रखा है कुछ, मानो ऐसा देख रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है चेयर फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो दोनों के दोनों चेयर फॉर्म बना के दिखा देता हूँ। ऐसा हो जाएगा पहला चेयर फॉर्म। ओके, अब देखो ध्यान से कैसे कन्वर्ट करना है। नंबरिंग करना है कैसे भी करके, 1 2 3, मैंने ऐसे किया नंबर, कैसे भी कर सकते हो। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद आयुपैक नंबरिंग, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद आयुपैक नंबरिंग। आयुपैक नोमेनक्लेचर में जो आप नंबरिंग करते हो उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐसे नंबरिंग किया है क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज मैंने कर दिया एक बार, तो चेयर फॉर्म में भी मुझे क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1 डालूंगा, ओके, ये वाला को 1, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो। क्यों ऐसा? बिकॉज इसमें भी मैंने क्लॉकवाइज ही किया है, इसमें क्लॉकवाइज नंबरिंग किया है ना, इसमें भी क्लॉकवाइज ही नंबरिंग करना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो भी ग्रुप वेज पे दिखाया जाता है वो हमेशा अपवर्ड होना चाहिए, और जो भी ग्रुप डैश पे दिखाया रहता है वो हमेशा डाउनवर्ड होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। Whatever is shown on wedge must be up। आप कहाँ पे, आप चेयर फॉर्म में, आप चेयर के अंदर उसको ऊपर दिखाना है, और जो भी ग्रुप यहाँ पे डैश पे दिखा गया है वो चेयर में नीचे आना चाहिए। ओके, अब चालू करते हैं। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यही है हमारा, तो यहाँ पे ऊपर होता है आपका एक्सियल, ऊपर हो गया एक्सियल, राइट, यहाँ पे हो जाएगा एक्सियल नीचे, और 3 पे हो जाएगा एक्सियल ऊपर, एंड सो ऑन, करेक्ट। तो यहाँ पे एक्सियल ऊपर, यहाँ पे एक्सियल नीचे, यहाँ पे एक्सियल ऊपर, ऐसा करके कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेटोरियल बनाएंगे भी। लेट्स मेक द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यहाँ पे इक्वेटोरियल ऐसा आएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल ऐसा आएगा, यहाँ पे इक्वेटोरियल ऐसा आएगा। इक्वेटोरियल मतलब टेढ़ा बनाना होता है ना, बना लिया। ओके, नाउ लेट्स पुट द ग्रुप्स। 1 पे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन इज ऑन वेज, वेज मतलब अपवर्ड, तो इसके लिए क्लोरीन को मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो क्लोरीन यहाँ पे एक्सियल पे आ जाएगा, और दूसरा कौन है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो क्लोरीन हैज टू बी अपवर्ड, इसके लिए क्लोरीन को अप। थर्ड में ब्रोमीन है,
थर्ड पे कौन है? ब्रोमीन है, बट ब्रोमीन हैज बीन शोन ऑन डैश. सिंस ब्रोमीन हैज बीन शोन ऑन डैश, तो थर्ड में यहाँ पे नीचे ब्रोमीन आएगा, बस डैश मतलब नीचे आना है, तो अभी ब्रोमीन बना लूंगा मैं. ब्रोमीन नीचे आएगा और हाइड्रोजन ऊपर आएगा, इसका मतलब थर्ड पे तो ऊपर हाइड्रोजन और नीचे ब्रोमीन, तो यहाँ आ जाएगा आपका ब्रोमीन. तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला चेयर फॉर्म. तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला चेयर फॉर्म. नेक्स्ट चेयर फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ. दिस इज द अदर चेयर फॉर्म. ऐसा हो जाएगा दूसरा चेयर फॉर्म. अब ये रेफरेंस है, ये एक्सियल यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा, एक्सियल नीचे होता है इस पॉइंट पे इस चेयर फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्सियल ऊपर, यहाँ पे फिर से एक्सियल नीचे. बना लिया एक्सियल. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 are numbered in this manner. Why? बिकॉज ओरिजिनल में मैंने नंबरिंग क्लॉकवाइज किया था, तो इस पे भी नंबरिंग क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा. तो दिस इज क्लॉकवाइज नंबरिंग. ओके, हो गया, बना के दिखा दिया. अभी नंबरिंग हो गया क्लॉकवाइज. नाउ 1 पे क्लोरीन है, बट क्लोरीन इज ऑन वेज, यहाँ पे वेज पे है, मतलब वो ऊपर आना चाहिए, बट यहाँ पे 1 पे जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो मैंने बनाया नहीं है, तो बनाना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड. यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा. ब्रोमीन नीचे आएगा थर्ड पे, बिकॉज ब्रोमीन को डैश पे दिखाया गया है. सिंस ब्रोमीन इज ऑन डैश, तो उसको नीचे बनाना पड़ेगा, इसके लिए थर्ड पे नीचे ब्रोमीन है, और 1 पे नीचे कौन है? हाइड्रोजन. ओके, तो ये दोनों के दोनों चेयर फॉर्म सही है. एग्जाम में कोई भी दिया जा सकता है, इसके लिए दोनों ही हमको बनाने आने चाहिए. ओके, तो इसके लिए आपको बताना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं. सो वेज पे जो होता है वो अपवर्ड होना चाहिए चेयर में, डैश पे जो होता है वो चेयर में नीचे आना चाहिए. ये पहली बात है. दूसरी बात क्या है? नंबरिंग अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो फिर चेयर्स में भी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए. ओके, so this is also correct, this is also correct, both are chair forms of this particular molecule. और एक करके देखते हैं, कन्वर्ट. मानो यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने वेज पे,
और यहाँ पे लगा दिया मैंने वेज पे लेट से फ्लोरिन। अब बनाते हैं। ऐसा होगा। नंबरिंग करना पड़ेगा पहले। 1 2 कैसे भी कर सकते हो, नंबरिंग के लिए कोई रूल नहीं है। अगर ऐसा नंबरिंग किया है तो यहाँ पे 1 है ये हमारा, तो ऐसा ये 1 2 ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। ऐसा हो जाएगा। तो ये मैंने सारे जो बॉन्ड्स अभी बनाए हैं वो वर्टिकल बनाए हैं, मतलब सारे के सारे मैंने एक्सियल बनाए हैं। एक्सियल 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 एक्सियल, these all are axial bonds because they are vertical। तो यहाँ पे एक्सियल ऊपर, यहाँ पे एक्सियल नीचे, यहाँ पे एक्सियल ऊपर, यहाँ पे एक्सियल नीचे, बना दिया एक्सियल। अब इक्वेटोरियल बनाएंगे। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बनाएंगे, एक्सियल तो बना दिया। इक्वेटोरियल के लिए यहाँ से चालू करेंगे, ये इक्वेटोरियल यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल ऊपर, वापस यहाँ पे इक्वेटोरियल नीचे, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल ऊपर। ऐसा हो जाएगा। दिस इज द चेयर फॉर्म। नाउ नाउ देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज नंबरिंग किया है, यहाँ पे भी इसके लिए मैंने क्लॉकवाइज नंबरिंग किया है। सो 1 2 3 4 5 6। चलो 5 6 भी बनाना पड़ेगा ना। 5 6 यहाँ पे ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6, एक्शन, यहाँ पे ये एक्शन, सब बन गए। नाउ वी हैव टू फिल द ग्रुप्स। ग्रुप्स कहाँ पे हैं? थर्ड पे और सिक्स्थ पे। थर्ड पे फ्लोरीन है और सिक्स्थ पे मिथाइल है। चलो थर्ड पे और सिक्स्थ पे आ जाते हैं। तो थर्ड पे कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज ऑन वेज। वेज मीन्स अपवर्ड, ऊपर होना चाहिए। तो थर्ड पे फ्लोरीन लगा देंगे, तो यहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा। और सिक्स्थ सिक्स्थ में भी ऊपर आना चाहिए, सिक्स्थ में भी ऊपर आना चाहिए मिथाइल CH3, बिकॉज वो भी वेज पे ही बनाया है ना। दिस इज ऑल्सो ऑन वेज, हेंस दिस ऑल्सो हैज टू बी अपवर्ड। तो सिक्स पे अपवर्ड कौन सा है वहां पे बना देंगे, बट सिक्स पे अपवर्ड जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो वहां पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा CH3। हो गया, बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन थर्ड पे, और सिक्स में भी एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बन गया। बाकी सारे इसमें क्या है, सब बाकी कुछ नहीं है, तो मतलब बाकी सब में हाइड्रोजन ही है। तो अगर वो नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी बॉन्ड्स दिखा दिए थे मैंने, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन, बट यू डिड नॉट शो द हाइड्रोजन एटम्स एंड आल्सो यू डिड नॉट शो द बॉन्ड्स। हम लोग हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं ना, तो जो बॉन्ड्स हाइड्रोजन के हैं वो भी हम लोग नहीं दिखाते हैं, बट यहाँ पे मैंने बना दिए थे, इसके लिए दिखा दिया। दिखाना कौन सा है सिर्फ हमें? थर्ड और सिक्स पे, बिकॉज थर्ड और सिक्स पे ग्रुप्स है। ओके, सो ऐसा हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस टू दिस फॉर्म। इसी को हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। कोई बोलेगा कि नहीं मुझे वन यहाँ से चालू करना है,
That's also fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You can start one from here, no problem. Okay. देख लो इसको और बताओ कोई डाउट है. Yes, any doubt? Okay, fine. अभी क्वेश्चन करते हैं. This is the question. Draw the most stable chair conformer of 1,4-dimethyl cyclohexane. मतलब 1,4-dimethyl cyclohexane का सबसे स्टेबल चेयर कन्फॉर्मर कौन सा है? तो हम लोग 1,4-dimethyl cyclohexane को ये दिखा सकते हैं चेयर फॉर्म में. अब हमें पता है कि जो दो मिथाइल ग्रुप्स है, अगर दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स आ गए आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ही वो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, बिकॉज वी नो दैट मैक्सिमम ग्रुप्स should occupy the equatorial positions in the chair conformers. So if I want the most stable chair conformer, I'll have to make those groups occupy equatorial positions. So the two methyl groups must be at equatorial positions for the maximum stability. देख सकते हो आप यहाँ पे भी ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यहाँ पे भी मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे है. Hence I can say that this is the most stable chair conformer. Most stable chair form of 1,4-dimethyl cyclohexane. Okay. क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशंस. So this is the most stable chair conformer of 1,4-dimethyl cyclohexane. मिथाइल के बदले में अगर क्लोरो होता 1,4-डाइक्लोरो तो भी वही आंसर होता. दोनों के दोनों क्लोरीन को हम लोग डाल देते इक्वेटोरियल पोजीशंस पे. तो 1,4-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का भी सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर कन्फर्मर वही यही होता है, जहाँ पे दोनों के दोनों क्लोरीन एटम्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे होते हैं. ये भी देखो, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी देखो इक्वेटोरियल है. So both the methyl groups are present at equatorial positions, and hence this is the most stable chair conformer of 1,4-dimethyl cyclohexane. Okay, next question. Draw the most stable chair conformer of this molecule. ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे के रखा है वेज और डैश. अगर वेज और डैश ऑलरेडी दे के रखा है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक बार चेयर को ऐसे बना के देखने का और एक बार चेयर को ऐसे बना के देखने का. यही दो ऑप्शन है हमारे पास.
कब ऐसे दो ऑप्शन है? जब वेज और डैश ऑलरेडी देके रखे हो क्वेश्चन के अंदर, तब। ओके, तो करो इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लिया। अब देखो बना रहा हूँ मैं चेयर कन्फर्मर। पहला वाला चेयर कन्फर्मर बना कर दिखाता हूँ। ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे 1 एडिशन, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। यहाँ पे 2 पे एडियल पे नीचे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे OH, because OH is on dash, so OH must be below, downward. ऐसा हो जाएगा। So this is 1, this is 2, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे वापस है। ऐसा हो जाएगा। ब्रोमीन यहाँ पे ये 4, बिकॉज ब्रोमीन भी डैश पे है, राइट। 5th पे यहाँ पे क्या है, ऊपर ये और ये ऐसा, बट ये ग्रुप वापस जो है ये भी आपका डैश पे है, तो ये भी नीचे आना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा फिर नीचे, और ऊपर कुछ नहीं था हाइड्रोजन। This is going to be one chair conformer of this molecule. The other chair conformer can be again drawn like this. यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये 1 है तो this is 1, यहाँ पे H, नीचे OH, ये 2, this is 3, then this is 4. ऐसा हो जाएगा। 4th पे ब्रोमीन नीचे है ना, डैश पे है ना, डैश मतलब नीचे, इसके लिए यहाँ पे ब्रोमीन को नीचे दिखा है। एंड 5th, एंड 5th ऐसा हो जाएगा। 5th यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा ये टर्ड ब्यूटाइल वाला ग्रुप, CCH3 थ्राइस, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। So these are the 2 chair conformers which I can draw for this particular molecule. Both are chair conformers of the same molecule. इसके लिए दोनों बनाने हैं और फिर हमको चेक करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फॉर्मर ऑफ दिस, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, अभी वो चेक करना है। दोनों में से स्टेबल कौन सा ज्यादा है, बोलो। इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको मैंने नाम दे दिया B। Which is more stable, A और B? ध्यान से देखो, which is more stable, A और B? स्टेबिलिटी के रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंड रीजन भी लिख दो चैट सेक्शन में। Yes, which is more stable, A और B? ओके, मैंने क्या बोला था स्टेबिलिटी के लिए, अगर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आ गया तो सबसे पहले उस पर फोकस करना है। ये देखिए ना 5th पोजीशन पे टर्ट ब्यूटाइल आ गया। टर्ट ब्यूटाइल जब भी दिख गया तो क्या देखना होता है कि वो वाला चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है जिस चेयर फॉर्म में टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप इज अलोंग इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, दैट इज CCH3 थ्राइस, तो वो वाला चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है जहां पे टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप इज ऑन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। A और B में किसमें टर्ट ब्यूटाइल इज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन? Out of A and B, which has tert butyl group along equatorial position, A or B?
हाँ बोलो। आउट ऑफ ए एंड बी, इफ यू नोटिस प्रॉपर्ली, ए के अंदर जो टर्ट ब्यूटाइल वाला ग्रुप है वो यहाँ पे है, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, और बी में टर्ट ब्यूटाइल यहाँ पे है, जिस एक्सियल पोजीशन, यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड है ना, ए में ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये टेढ़ा है, hence A is more stable than B. A will be more stable than B because in A the tert butyl group is along the equatorial position. तो ये है यहाँ पे बोला गया है पॉसिबल चेयर फॉर्म्स दो है ए और बी, और फिर आप बोलोगे कि आउट ऑफ ए एंड बी A is more stable because in A the tert butyl group is along equatorial position. This was B, this was A. A में क्या है, tert butyl वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है. So always remember, whenever you come across a tert butyl group, then for maximum stability of the chair conformer, the tert butyl group must be along equatorial position. All right. Okay. इसमें कुछ क्वेश्चंस है, वो बाकी आप कर लेना क्वेश्चंस. Then if you have doubts, you can ask. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं, वो आपके लिए है, so that you can solve them for practice. Practice them, and then if you have doubts, you can look into the solutions. यहाँ पे solutions भी है. Okay. Now another last question we'll do based on this chair conformer. इसके चेयर कन्फर्मर्स बनाना होगा. ये अगर 1, इसको 2, इसको 3 माना, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा एक्सियल, इक्वेटोरियल नीचे आएगा. फ्लोरीन डैश पे है 1 पे, मतलब फ्लोरीन नीचे की ओर जाएगा, डैश मतलब नीचे, तो ऊपर हाइड्रोजन जाएगा. ये 1, ये 2, 3 पे कौन है, 3 पे ऐसा हो जाएगा, 3 ऐसा हो जाएगा, 3 पे यहाँ पे आयोडीन ऊपर आ जाएगा बिकॉज आयोडीन इज ऑन वेज, राइट राइट, आयोडीन इज ऑन वेज. तो ये एक फॉर्म आ जाएगा. सो दिस इज ए, इसको मैंने ए मान लिया. अब एक बी नाम का चेयर कन्फॉर्मर में बनाऊंगा. लेट्स ट्राई अनदर कन्फॉर्मर व्हिच इज बी. सो बी वाला क्या होगा देखते हैं. मैंने बोला है ना, हमेशा दोनों के दोनों चेयर कन्फॉर्मर बनाने की आदत है. इसको बी, ये एक्चुअल हो जाएगा, ये कार्बन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. यहाँ पे एक्चुअल नीचे होता है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक्चुअल थर्ड पे भी नीचे आएगा, इक्वेटोरियल ऐसा है. आयोडीन इज ऑन वेज, वेज मतलब ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर की ओर आयोडीन है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन. So these are the two possible chair forms of this particular molecule. My question is, out of A and B, which is more stable? A or B? Which is more stable out of A and B? दोनों ही इसके चेयर फॉर्म्स है. इसके चेयर फॉर्म्स मैंने बना दिए दो. अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर स्टेबल, बताओ. अब इसमें टर्ट ब्यूटाइल वाला ग्रुप तो है नहीं, तो उसको भूल जाओ. टर्ट ब्यूटाइल तो है नहीं यहाँ पे, इसको छोड़ दो. अभी क्या देखना होगा, अभी ये देखना होगा कि maximum groups should be at equatorial positions.
अब A में iodine is on axial and fluorine is at equatorial, and B में iodine is at equatorial and fluorine is on axial. तो मतलब A में भी सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इक्वेटोरियल पे है, B में भी सिर्फ एक ही एटम है जो इक्वेटोरियल पे है. तो इससे भी डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है. क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि A में भी एक ही एटम है जो इक्वेटोरियल पे है और B में भी एक ही एटम है जो इक्वेटोरियल पे है. ऐसा कोई नहीं कन्फर्मर है जहाँ पे दोनों के दोनों एटम्स इक्वेटोरियल पे हैं. ऐसा कोई भी कन्फर्मर यहाँ पे नहीं है. We have drawn two, right? There are only two possibilities here. एक A और दूसरा B. तो A के अंदर भी एक ही एटम है ना जो इक्वेटोरियल पे है, वो है फ्लोरीन. और B में भी एक ही एटम है जो इक्वेटोरियल पे है, वो है आयोडीन. तो आप क्या करेंगे? अब ये देखेंगे कि जो ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा बड़ा ग्रुप है, वो होना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे. सो द लार्जर ग्रुप मस्ट बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर हायर स्टेबिलिटी. आउट ऑफ फ्लोरीन एंड आयोडीन साइज अगर देखो आप, तो आयोडीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा होता है. Iodine is larger than fluorine. Iodine is larger than fluorine. Since iodine is larger than fluorine, iodine should occupy equatorial position for greater stability. Hence, B is more stable than A because B में iodine is at equatorial position. So B is more stable than A. B will be more stable than A because B में जो बड़ा वाला ग्रुप है, फ्लोरीन और आयोडीन में से बड़ा कौन है? आयोडीन है. तो वो है आपके इक्वेटोरियल पोजीशन. All right, the chapter is over. I will show you one video now. वो आपको एनिमेशन की तो वो अच्छा आपको लगेगा क्योंकि वहाँ पे चेयर के बारे में बताया गया है. Watch that video. In the next lecture, we'll start with a new chapter. Okay. अभी आप देख लो ये वीडियो, आपको उससे काफी इमेजिन करने में, विजुअलाइज करने में आसान पड़ेगा. वीडियो देख के चेयर फॉर्म्स. Hexane. You think of a hexagon. Cyclo is a ring, hex is 6, and Ain tells us there's only single bonds. And here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. The problem with this structure is that all of the carbon atoms are sp3 hybridized. This means that carbon prefers to be tetrahedral with an ideal bond angle of approximately 109.5 degrees. But if you look at the structure, a planar hexagon has angles that are much, much bigger than 109.5. So what does that do for the structure? Let's take a look at the model kit. You can follow along by getting your own kit at leiaforpsi.com/kit. Here we have a cyclohexane where each of these represents a carbon atom with 4 bonds. So we have 2 going to the ring and 2 hydrogen atoms. If we look at a top-down view, it kind of looks like a hexagon, but take a look what happens when I try to flatten it out. Do you see how it looks like the kit is about to break? This molecule is very, very unstable, and if I leave it as a flat hexagon, it will break. Carbon atoms will compensate for this by trying to readopt that 109.5 configuration as follows. We'll take the nearby carbons and bend them, alternating up and down. Now it looks like a nice and comfortable conformation. Take a look. Every other carbon, one is up, one is down, up, down. But all the carbon atoms appear to have that comfortable 109.5 configuration, making it much more stable. In fact, cyclohexane is the most stable cycloalkane because it can adopt this configuration. I have seen chair conformations represented in some ridiculous ways that tell us nothing about what's going on, where your substituents are located, what atom is up or down. That doesn't work. Instead, let's see how to take our model kit and put it onto 2-dimensional paper using the drawing chair conformation tutorials linked below. We'll start with the simple parallel lines for the chair. Add the carbon that is facing up,
the carbon that is facing down, and then we'll go ahead and add our substituents. I've added color substituents to help you follow along. Notice that I have red in the up position and blue in the down, and this is just to differentiate between the hydrogen atoms. Why is this called a chair conformation? Well, if I line it up like this, I want you to imagine a beach chair. This is where you put your head, this is where you put your body, this is where you relax your legs, and you just lay down and relax on this chair conformation. Studying organic chemistry, of course. Now let's see this in 2 dimensions on the screen. I've matched up the colors to help you see clearly what is going up, what is going down, and where everything faces. Now that we have it on the kit and in the drawing, let's try to understand exactly what it is that we're looking at. There are 4 things you need to recognize when looking at a chair conformation to help you understand everything that's about to follow, from stability, interactions, and even what's going to happen in your reaction mechanisms. The first 2 are simple. If I take the cyclohexane and I look at it from top down or look at it from the side, I want to clearly distinguish between the substituents that are facing up and out of the page compared to substituents that are facing down or going into the page. We've shown this on the kit with red hydrogens facing up and blue hydrogens facing down. And we'll show this on the hexagon where the red hydrogens are on a wedge coming out of the page and the blue hydrogens are in dashes going into the page. That was the easy part. A little more difficult to understand is the nature of the substituents, particularly those that are axial versus equatorial. We'll represent this on the green is equatorial. Green, green, white, compared to the previous one, which had all the red going up and all the going down. And that's because we're looking at the specific orientation of each substituent. If you look at this from the chair conformation perspective, you'll notice that all of the green substituents are pointing straight up and down. In fact, if we plot this on a graph, they're approximately on the y-axis. Given that they're y-axis substituents, we call them axial. And the axial substituents, if drawn correctly, should be pointing straight up or straight down. If you look at it from the top view, the green substituents are pointing straight up and straight down at you. The white substituents don't really have the specific direction. They appear to be slightly angled up and slightly angled down. But if you imagine this chair as a globe, the chair component would be the middle of the circle, and all of the white substituents are pointing outward. So do you see how they perfectly surround the perimeter or the equator? And if we look at it from the side and know that it's going towards the outside, this is what we call the equatorial substituents because they're pointing towards the equator. They're not straight up, they're not straight down. You should draw them with a slightly angled line, and that represents equatorial. One point of confusion comes up with which direction to put your equatorial substituents. If you're drawing a chair like this one is pointing down, and it's towards the left. This one here is pointing up, but it's towards the right. What do you do with the substituents that are pointing straight at you? Notice this one right here is directly at you. Well, you can't draw a straight line outward, so what you do is you tilt it slightly to the right, so you draw it to the right, or you tilt it slightly to the left and draw it to the left. I've seen drawings where people say, wait, that's incorrect, it should be right or it should be left. And the answer is not necessarily. It's pointing straight at you. But because we can't show that on paper, we tilt it slightly to one direction or slightly to the other direction, and both are correct. Students who follow my drawing tutorial do not lose points for careless mistakes because it's very easy to see on their drawings what is up, what is down, what is axial, and what is equatorial. And on your exams, that's exactly what your professor is looking for. Let's see what this looks like on paper, starting with a simple chair skeleton. We'll add the axial substituents, and I want you to recognize the pattern.
Remember on the kit, I showed you that the green and white were alternating because the axial went up, down, up, down. Well, we have the same pattern here. Up, down, up, down, up, and down. The white substituents will show in gray, and we'll start with this one going down, but it's equatorial, so it's not an axis, a straight up and down, but it's slightly down. And this one here is slightly up. This is the one that comes straight out at you. So if we look at it slightly from one side or slightly from the other, you just offset it a little bit so it doesn't look like it's straight down, and you're good to go. This one is to the left, and again to the left, one is up, one is down. And here, just like the one coming forward was straight at you, this one's going straight back. But since we can't show that, we offset it slightly to one side. Some professors will draw it on that side. Same thing. You're simply representing an equatorial substituent behind the ring pointing far away into the equator. Why is it so important to understand the relationship between substituents? In chemistry, every reaction is all about the stability. If a molecule is happy, it'll be stable and unreactive. If it is unhappy, it'll be unstable and very reactive. So we need to understand the interactions between the cyclohexane substituents to determine what is considered more stable and what is considered less stable. Let's look on paper first. Substituents that are in the axial position are relatively close to each other. They're pointing in the same direction. They can get in each other's van der Waals space or personal space, and that makes them very unhappy. In organic chemistry, if you're trying to understand the concept, relate it to a human characteristic to help it make sense. I want you to imagine that you're speaking to someone, but they're very, very close. Unless there's someone you know and you're comfortable enough getting very close, giving them a hug, you don't want strangers up in your personal space. And if someone's talking to you that closely, you'll either take a step back or push them away. And if you're too shy to do that, you're going to feel very, very tense and uncomfortable the entire time. Axial substituents, if they're really big, will get in each other's personal space, making them very, very uncomfortable. Let's take a look at the model kit. Looking at the axial substituents, they don't appear too unfriendly. This hydrogen and this hydrogen are relatively small, and they're almost in each other's personal space. But atoms have to be next to each other, so they'd rather have something small. You'd feel much more comfortable if a little kid stands next to you than if a big fat adult starts talking in your face, right? What happens if I swap that hydrogen for a methyl group? This carbon here has 1, 2, 3 hydrogens, and now the atoms are much closer to each other and they're starting to encroach on each other's personal space. What if I add a second methyl group, once again carbon with 3 hydrogens? They're definitely getting into each other's personal space. They're not comfortable enough to tell the other one to back up, so the entire molecule will bend, giving it more space. They're too close, it'll slightly bend out of the way. This is causing strain on the molecule, and this is what adds to the instability. Now I've added 2 more CH3 groups to our carbon, making it an isopropyl substituent, 3 carbons bound at the second carbon to the parent chain. And now look what happens. It looks pretty innocent and unassuming, but carbon bonds can rotate. And when this thing rotates, look at that. Definitely in each other's personal space, makes it very, very uncomfortable and very, very unstable. Axial substituents will have these diaxial interactions, and this is what you want to avoid at all costs. Here we have a slightly different version of the molecule where the substituents are next to each other but in the equatorial position. We went from 1,3 to a 1,2 structure. Notice here we have the methyl group, and here we have the isopropyl group. They're still a little bit close to each other, but the interactions are not as bad as they were before, and that's because they're in the equatorial position. The key to recognize here is when a substituent is equatorial, it points out to the middle of nowhere. It's not pointing into the face of another
axial substituent, but instead it points out to nowhere. There's much less going on there. If you think back to Newman projections, tutorial series link below, you'll see that we do have some gauge interactions going on here, but it's much, much less unfavorable compared to the diaxial interactions that we saw earlier. What does this mean? Axial substituents are highly unfavored, equatorial substituents are highly favored, and to draw a stable molecule, your goal is to put as many of the big and bulky substituents in the equatorial position, where the bulkier it is, the more likely it wants to be equatorial, and the rest can be axial because they'll be less unfavorable. Here we have the two molecules on screen, and they're not the same structure. I did not convert one into the other, but on the kit, I actually broke off bonds and moved things around. Notice that if this is carbon 1, then the methyl is on carbon 3. Here the methyl is on carbon 2. What I want to show you here is how in the first structure, where the isopropyl and the methyl are both axial, we have that diaxial interaction, that invasion of personal space that makes it very unstable. In the second structure, it almost looks like the two groups are closer to each other, so it looks like it should be less stable. Think back to what we saw in the model kit, and if you're not comfortable, rewind the video and look again. In the diaxial interactions, they were right on top of each other. They were too close. In the equatorial, even though there are neighboring carbons, notice I brought the groups closer together, but they were facing out in different directions on the equator. This one right here is pointing down and towards the back. This one right here is pointing up, coming a little forward. And that means they're not that close to each other. They're not in each other's personal space. And that makes it much, much, much more stable. The fact that one is cis and one is trans has nothing to do here because we're simply focusing on the diaxial versus the equatorial interactions. But how do you take a molecule that has diaxial interactions and make it more stable to put the substituents equatorial without breaking bonds like I did? That happens through the interconversion or ring flip of the chair conformation, and that's exactly ओके, सो वही है, स्टेबिलिटी के बारे में सब कुछ है अल्टीमेटली. So fine then, we'll stop. We have completed the chapter.